And I think we'll take 2 to 3 minutes more to finally begin. So before that, it will be a good idea if you can keep a notebook and a pen ready with you, because there could be a lot of information that would come your way, and you may want to write down some important points and information. Second, we have kept all our audio settings at optimal level. We have ensured कि हमारी audio streaming में there should not be any problem. You feel free to adjust audio volumes from your end. आप उसको बढ़ाना घटाना अपने हिसाब से करें. As far as video setting is concerned, we'll Nilesh sir, please start my video now. On your video, okay. Hello, this is Anubhav Sinhal. I think Manish sir को कुछ हुआ क्या? Manish sir, yeah, Manish sir lost connection. I think he's out of. Manish sir lost connection. Yes. I think my colleague Manish was making an announcement, and there's been some glitch. He's lost connection, so he should be joining back in a moment. So till that time, let me take over. So as Manish was talking about, we will be waiting for another 2-3 more minutes for participants to come in. Myself is Anubhav Sinhal, and today we'll be talking about how to plan for 4 years of your high school. Manish has come back. Yes, sir. Sorry, sir. I think I got disconnected. आप continue कीजिए, sir. नहीं. तो बस I was just telling. So you please start, sir. Sir, you please continue. So where did I mean I went out, sir. कहाँ मैंने miss किया होगा? नहीं, तो just आपने बोलना ही चालू किया और फिर immediately वो disconnect हो गया, तो आप वापस शुरू से ही चालू करें. Okay. So once again, a very good morning and welcome to UT's webinar. We are planning to start this in next 2 to 3 minutes. Before we begin, there are a few important announcements. So one of them is that you can keep a copy and a pen ready with you, because there could be a lot of information flowing your way and you may want to write it down. As far as audio settings is concerned, we have kept it at optimum level from our end. आप अपने end पे volume बढ़ाना घटाना कर सकते हैं so that it suits you as it suits you. As far as video is concerned, we'll highly recommend कि आप video setting के लिए view right hand top एक button है आपकी screen पे which is called view. You select speaker view in that. आप उसमें speaker view select करें, and whosoever is the speaker, that person will be centrally on your screen and you will not be distracted. Also, from your end, we will recommend, if possible, and if your bandwidth permits, if your environment permit, if you can keep your video in an on mode. क्योंकि अब हम ये digitally connect हो रहे हैं, virtual mode में connect हो रहे हैं. So just like Samarth has recently done, and Mr. Deepak, thank you for this. So if you could put your videos on, it helps the speaker, make those virtual eye contacts, and it keeps our energy and motivation level high. तो अगर आपका background permit करता है, bandwidth permit करता है, आप कर सकते हैं. तो अपना video on रखें. You could keep your audio muted, and during the question and answers, which is towards the end of the webinar, तब आप unmute करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, queries, questions पूछ सकते हैं, and both of us will try and answer them. So once again, welcome to this webinar on planning 4 years. And these 4 years are most critical, crucial, important 4 years of any student's academic life. So welcome to this webinar on planning 4 years of your high school, that is 9, 10, 11, 12. Now I'll hand it over to Anubhav sir, who is also the first speaker in this webinar. Sir. So thank you very much, Manish ji. I welcome you all, parents and students. So this is something which me and Manish, do every Sunday, every second Sunday.
We are here at 11:30 and we are talking to students and parents. So this is the first of the series where, although we want parents to join as an audience, but I would want the आपके साथ जो बच्चा है, let him be the main listener to this presentation, because this is more कि शायद parents would know what is happening in 9, 10th, 11th, 12th, but बच्चों को नहीं मालूम होता है. जैसे जब मैं बच्चों से बात करता हूँ and when I talk to them, IIT, अपन को कहीं ना कहीं लगता है IIT नहीं मालूम है, बच्चों को नहीं मालूम है what is IIT, what is IIM, what is management, what is commerce, what is science. So the purpose of this talk is to that 9th and 10th standard kid who is probably not aware. So हमारा presentation is largely focused to that kid. So, and parents साथ में रहना जरूरी है to maintain focus for that kid, क्योंकि वो अभी भी थोड़ा सा distracted है, वो अभी भी शायद पेंसिल उंगली लेता है मुंह में, and he is doing that. So, लेकिन उसको जरूरी है कि वो अभी सोचना चालू करे, because आने वाले 2-3 साल में उसको एक डिसीजन लेना है अपने करियर का. So I want parent support कि जो उसके पास में बैठे रहें. I see मोक्ष शाह की मदर उसके साथ बैठी हैं. I see विवान के फादर उसके साथ बैठे हैं. So I would thank you for that, क्योंकि you are helping me to reach out to my audience, which is the standard 9th and 10th student. Now, what we are doing is, जो मैं और मनीष हर Sunday and for the next 12 months तक हम करेंगे ये, that we would come up every Sunday, we would come up with one of the career options, and this is the part of career training. And ये मैंने और मनीष ने पिछले 5-6 साल में evolve किया है, and Zoom and COVID has helped us in a very big way to evolve it in the correct format. पहले हम the format was a physical format. यहाँ पे एक नवी मुंबई में एक सेंटर हुआ करता IMEI, जो 250 की कैपेसिटी का हॉल हुआ करता था. शाम को 4 बजे पेरेंट्स को संडे को बुलाते थे. But in that format, what used to happen, efficiency बहुत high नहीं थी. Parents को time निकालना आना was not a very practical option. So वो उतना अच्छी तरह से deliver नहीं होता था. But पिछले 2 साल से from Zoom, what we've done is we've started doing these webinars where parents can listen from their comfort of the house and so we do series of these Zoom webinars, and we've broken this entire career series into multiple webinars, where today we are starting with the theme series, जहाँ पे हम पूरे 4 साल आपको कैसे प्लान करना है उसके बारे में बात कर रहे हैं. Then watch out for our next webinars, which would happen on every Sunday, where we may talk about individually only about study abroad, or only about engineering, or only about medical, or only about commerce, and so on and so forth. So with that background, let me get started with my presentation. So I'll share my screen and start a PowerPoint presentation. So please confirm to me whether you're able to see my presentation. Sir, is it all good? Yes, sir. Chaliye, thank you. So this is welcome to UT Talks. Now I'm formally welcoming you to UT Talks, which is, we call it as presentation by UT's Career Research Cell. And we both will be the 2 speakers, myself, Anubhav Sinhal, and my colleague Manish. And we would speak for about, I think, 40-45 minutes is what we are targeting. Now, since this is a presentation and there are about more than 50 participants who I see in this thing, so it would be a good idea कि आपके कोई questions आते हैं तो तभी की तभी note कर लें questions, and you ask us questions at the end of the presentation. Both of us will be available for Q&A at the end of the presentation. So that's the format which I'm looking at. Chaliye, let's get started. So as I was talking about, these are value-added lectures, workshop for students to largely promote awareness so that you can take informed decisions. I would request, please do not annotate anything on this. One sec. Nilesh sir, I would stop, and can you remove the annotation permissions? Yeah, I have removed everything. Chaliye. Okay. So if you could, thank you, Nilesh sir.
Students, please do not annotate on the screen as it disturbs the flow. So as I was saying, these are seminars to help promote awareness, which help you to take informed decisions. And as I said, this is second in series, planning 4 years of high school. The first we took was on RMO, we took Regional Maths Olympiad. Last Sunday, we took that. Now, what is coming up in May is study abroad. So this is about our webinars. So let's jump into today's topic, today's agenda. What I'll be talking about is, I'll be first talking about the Indian higher education scenario. So I will be seeing ki just as students of 9th and 10th, how are you looking to कि आपको क्या career pursue करना है, इंडिया में कैसे होता है. I will give you an Indian higher education का एक perspective दूंगा, and then I'll tell you tips on how to plan your 9th and 10th standard को कैसे plan करना चाहिए, and then we will talk about 11th and 12th में क्या approach लेनी चाहिए, and then my colleague Manish would come in over here and he would discuss. तो पहले 3 part मैं discuss करूंगा, and then some popular career routes my colleague Manish would come in and talk about. He would discuss UT इधर आपकी कैसे कैसे help कर सकता है. He'll discuss about UT programs, and finally we would have open house Q&A. So this is the brief agenda for today. Having said this, चलिए, before we begin, it would be a good idea to make notes. तो एक copy pencil अपने पास रखें, and question answers will be at the end. We will also be giving a feedback form in the chat. This is a feedback form. हम लोग, मैं और मनीष बहुत मेहनत करते हैं, and as per our career cell, Nilesh sir and our backend team, हम लोग बहुत hours spend करते हैं doing these webinars. So, you know, there will be a feedback coming to you at the end of the presentation. I would want you to please give us this feedback, जहाँ पे आप बताएं कि आपको कैसा लगा, कितना अच्छा लगा, और क्या information चाहिए. That helps us to improve our efforts. Chaliye, let's get started. So before we get started, we just want to share some results with you that, you know, as part of this, ये 4 साल की जो success story जो है, बच्चे हमारे साथ 9 से 12 तक जुड़ते हैं. So I very proudly wish to share a success story. Obviously, success stories are the ones which are shared. So we had the student Swam Chaube who joined us as part of UT Champions program. He got some very, very dream result we had in 2020. He secured All India rank 1 in JEE Mains, Swam Chaube. He was a student with us at Universal Tutorials Champions program. He was part of our Champions program. So that's the kind of success we get. So a dream success. Now, Swam was All India rank 1. So kai parents मेरे को कहते हैं, sir, वो वाला result is the exceptional results. I agree, those are exceptional results. I'm bringing in another success story, a local lad of Navi Mumbai, Kailash Gopal Krishnan, who studied at Bal Bharti. He was with us in 9th, 10th at Bal Bharti. Then 11th, 12th, he joined us in our UT Champions integrated program. Again, got 98.18 percentile. He had a pretty, but the success story is he landed up in BITS Goa. So that's the kind of support we try to give. We give you a career guidance ki, okay, अपन All India rank 1 नहीं आ सकते, but that doesn't mean अपन को कहीं ढंग का admission नहीं मिल सकता. He is now landed up in BITS Goa, pursuing, ये मेरी slide में dual degree है, but he's actually pursuing computer engineering. He got this. Pankaj, I would request please no annotations on the screen. Let me remove the annotations. Chaliye. Next, we had students coming to us. As I said, the students come to us for different reasons, and that's what you will see. Now, I have Yash, who came to us not for IIT. He came to us for a study abroad. So he had a single study abroad focus. He got SAT 1510, TOEFL 114, SAT subject 800 on 800. He went to pursue summer school at Harvard, then is currently at Purdue University doing first year in computer science. So that's Yash for you. So we have these different 3 success stories I shared with you. Having shared this, let me now get started with the agenda, planning 4 years of high school. Now, I think all of you in this webinar are primarily at a stage of life where you're looking ki kaise plan karna chahiye. So before we get into and understand kaise plan karna chahiye, it is a good idea. So, you know, I have this, the Universal Tutorials way.
well, this is what we've developed, what way we've developed, and this has evolved. And let me tell you, this experience has come as, मेरा नाम अनुभव है, मेरे दो तरह के अनुभव हुए हैं. एक अनुभव हुआ है as a professional counselor, as a teacher, जो मैं कर रहा हूं आपके सामने. And second अनुभव मेरे साथ, मेरा बेटा already pass out हो गया है, so उसके साथ भी as a parent का भी अनुभव है. So what I am trying to tell you is दो अनुभव मेरी जिंदगी के, एक as a professional counselor and as second as a parent. So उन सब का निचोड़ आपको अभी आ रहा है. So let's understand the career scenario in India. Career scenario in India कैसा है? So अगर आपको कुछ भी बनना है, you want to get into engineer बनना है, doctor बनना है, lawyer बनना है, professor बनना है, you want to get into hospital, engineering, किसी में भी जाना है. So let's understand India में कैसे चलता है. So if we try to understand the career scenario in India, so अगर आपको engineer बनना है, how does it work? There is, आपको 12th के बाद एक entrance exam लिखना पड़ेगा, which is IIT JEE, और then you can get into IIT Bombay. ऐसे एक institute में जाने के लिए आपको एक exam लिखना पड़ेगा, जिस इस exam का नाम है IIT JEE. अगर कोई कहता है कि मेरे को medical doctor बनना है, तो उसे भी एक exam लिखना है, which is NEET, National Eligibility Entrance Test, and then you can get into AIIMS. ये college में घुस सकते हो. Then you can pursue your choice. अब कोई कहता है कि मेरे को lawyer बनना है, तो भी आपको एक एग्जाम लिखना है, जिस एग्जाम का नाम है CLAT, and then you can get into probably an prestigious institute like NLU Bangalore. अब कोई कहता है कि मेरे को ये इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना है, मेरे को डिजाइन में जाना है, ठीक है, डिजाइन का भी एक एग्जाम है, NID का एग्जाम लिख के then you can get into these design institutes. कोई कहता है कि मेरे को आर्किटेक्ट करना है, तो आर्किटेक्चर का भी एक एग्जाम है, नाटा. कोई कहता है मेरे को होटल मैनेजमेंट करना है, उसका एक अपना एग्जाम है. कोई कहता है मेरे को मैनेजमेंट करना है, उसका अपना एक अलग एग्जाम है. कोई कहता है मेरे को कॉमर्स करना है, तो उसका CA फाउंडेशन का एग्जाम है. मेरा कहने का क्या मतलब है, इंडिया में हाउ इट वर्क्स इज, आपको अपना एरिया पहले डिसाइड करना है, आपको करना क्या है. आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको मैनेजमेंट करनी है, आपको कॉमर्स करना है, आपको लॉ करना है, क्या आपको करना है, एंड देन आपको उसका एक एग्जाम लिखना है. ये एग्जाम कब लिखना है? आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, बोर्ड एग्जाम्स के बाद आपको एक एग्जाम लिखना है, एंड देन यू विल बी एबल टू एंटर कॉलेज. सो आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट कि इंडिया में आप 12th बोर्ड एग्जाम से आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपको अलग अलग तरह के एग्जाम लिखने हैं. ऑलमोस्ट हर एक एरिया में जो भी आप सोच सकें उसमें एक एंट्रेंस एग्जाम है, and that entrance exam happens after 12th board exam. So having said this, this is the scenario. What has been, तो आपको तैयारी कैसे करनी? आपको तैयारी करने के लिए ट्रेडिशनल स्ट्रेटजीज कैसे रही हैं? पेरेंट्स इस चीज को और बच्चे भी इस चीज को रियलाइज नहीं करते हैं. वो क्या करते हैं? They just start very early. They write all kinds of exams. जो भी 7th, 8th, 9th में जो आते हैं, अरे ये ओलंपियाड लिखना है, ये लिख लो, वो लिख लो. They do not properly check. Student interest तो चेक ही नहीं होता है कि उसको करना क्या है. वो सब बिना चेक करे they just keep writing exams, and then that leads to confusion. So that's where we at Universal Tutorials are coming in, and we are saying कि हमारी क्या strategy? हमारी strategy is पहले कोशिश करो, explore and check your potential. आप किधर क्या करना चाहते? तो listen to these webinars, talk to fellow peers, उनसे बात करो, then choose focus on one exam कि अच्छा मेरे को ये करना है, and at the same time ensure कि board exam तो पक्का करना ही करना है, and then you prepare and then you get success. So आप इसको थोड़ा सा रोकें, थोड़ा सोचें, समझें, and that's what we would do today. So let's try to understand planning for 9th and 10th. 9th and 10th में क्या planning करनी है? So 9th and 10th में सबसे पहले I am talking about Olympiad exams. बहुत सारे Olympiad exams. So Olympiad exams को पहले अपन समझने की कोशिश करें. Olympiad exams अगर आप देखेंगे, एक तो ये स्कूलों में SOF के बहुत सारे exams हैं, many exams. I consider them Science Olympiad Foundation के. I consider them they are not of very good quality. So मैं generally बच्चों को recommend करता हूँ कि ये नहीं करने. NTSC बहुत अच्छा एग्जाम है, इट्स अ वेरी गुड एग्जाम, लेकिन इसके साथ चक्कर ये है, इट्स अ 2-stage एग्जाम.
First stage is conducted by local state board and second stage is conducted by CBSE. अब ये लोकल स्टेट बोर्ड का जो एग्जाम होता है, बच्चे जो CBSE एंड ICSE के हैं, लोकल स्टेट बोर्ड का जो होता है उसमें फर्स्ट स्टेज में सोशल स्टडीज का पेपर होता है. सो ऐसा एग्जाम तैयार करके अपन आगे करने की क्या कोशिश कर रहे हैं. सो आई डू नॉट रेकमेंड दिस एग्जाम. कोई मतलब नहीं है ये करने. जूनियर साइंस ओलंपियाड अगेन बहुत अच्छा एग्जाम, लेकिन इतना वाइड सिलेबस कवरेज है, एक एवरेज बच्चा इस कोई एग्जाम को एट स्टैंडर्ड 8th 9th 10th पे कोप अप नहीं कर पाता. तो वी एट यूनिवर्सल ट्यूटोरियल्स रेकमेंड की यार इसकी जरूरत नहीं. तो अगर एग्जाम की कौन से एग्जाम की जरूरत है, आई थिंक इज वी रेकमेंड मैथ्स ओलंपियाड. मैथ्स ओलंपियाड एक सिंपल एग्जाम है विच हैपेंस बाय ओमी बाबा. इसको करने से आई थिंक अपन कर सकते हैं. तो वो एक फोकस, दिस इज व्हाट वी आर रेकमेंडिंग कि अगर आपको प्लान करना है तो इसके लिए प्लान करें. Now why RMO? Because math is fundamental to all streams. इसमें जो मैथ्स है ये ना ऐसे नहीं है कि मेडिकल वाली मैथ्स है, नहीं. मेडिकल में तो मैथ्स की जरूरत नहीं है, नहीं. जितनी आपको बेसिक अलजेब्रा, बेसिक ज्योमेट्री जो चाहिए, जो आपको सब टाइम पे चाहिए, उतनी ही मैथ्स इसमें कवर होती है. इट्स वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड एंड ये अपना ऑब्जेक्टिव मीट करता है कि जो फाउंडेशन चाहिए वो मिल जाती है. तो 9th 10th में दिस इज व्हाट वी रेकमेंड. एंड एक और चीज जो हम रेकमेंड करते हैं, बोर्ड एग्जाम की इंपॉर्टेंस. कई लोग व्हाट दे डू इज, वो एक कहावत है व्हिच आई ऑलवेज टेल व्हेनेवर आई एम टेकिंग दिस लेक्चर, इज अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 in the bush. ये मैं हर बार बोलता हूँ. कई लोग कि नहीं हमको तो 11th 12th में एक्सेल करना है, वो IIT JEE के एग्जाम में एक्सेल करना है, IPM क्लैट के एग्जाम में एक्सेल करना है, उस बच्चे की अभी से तैयारी करवाओ. तो उस तैयारी के चक्कर में बच्चे को उस फाउंडेशन में अभी ही घुसाते. मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो 9th 10th में वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते हैं. मालूम पड़ता है बोर्ड एग्जाम वो लोग नहीं कर पाते, उस चक्कर में बोर्ड एग्जाम बहुत मेस कर देते हैं और ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं. वो जो है ना, एक बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 in the bush. वो 2 के चक्कर में आप जो आपके हाथ में है वो भी खो देते हैं. इधर एक मेरे क्लासिक एक बच्चे की एक स्टोरी सुनाता हूँ एंड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट स्टूडेंट. दिस इज अ स्टूडेंट जो मेरे साथ करीब 6 साल पहले था, अब तो 6 भी नहीं बल्कि 7-8 साल पहले होगी बात हो गई. दिस इज शिरीष अग्रवाल करके एक स्टूडेंट था मेरा, जो ही स्टडीड विद अस इन क्लास 9th 10th 11th 12th. तो बच्चों से जैसे दोस्ती हो जाती है वैसे रैपो डेवलप हो गया था, बच्चे से दोस्ती हो गई थी. वो पास आउट हो गया 12th में. 9th 10th 11th 12th में उसने इतना ध्यान नहीं दिया, मेच्योरिटी नहीं आती बच्चों में, ठीक ठीक पढ़ाई करी उसने. तो वो ही केप्ट इन टच विथ मी. ग्रेजुएशन के बाद 4-1 साल बाद उसका एक बार फोन आया, बोले अनुभव सर आपसे एक गुड न्यूज शेयर करनी है. मैंने बोला बताओ क्या गुड न्यूज. बोले सर आई गॉट 99.9 percentile इन कैट एग्जाम. कैट इज मैनेजमेंट का एग्जाम होता है. he was almost an India topper in that exam. I was like thrilled. Shirish, wow, you've done wonderfully well in this exam. बहुत अच्छी बात है भैया, बधाई, बहुत बहुत बधाई. प्लीज आगे जो भी होता है मेरे को अपडेट करना. 2-1 महीने बाद उससे बात करी. आई थॉट ही विल गेट इन IIM अहमदाबाद, IIM कैलकाटा, बैंगलोर के कॉल्स आएंगे उसको. 2-3 महीने बाद बात करी. ही सेड नहीं सर, कहीं से भी कॉल नहीं आया. मैं बोला अरे. बोले सर आपको याद है ना मैं 10th में सीरियस नहीं था, आई हैड ओनली 77%. तो सर नहीं आया कहीं से कॉल, ऑल्दो ही वाज द टॉपर देयर. सो बोर्ड एग्जाम बच्चों को नहीं रियलाइज होता है कि ठीक है शॉर्ट टर्म में जरूरत नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फाउंडेशन स्टोन ऑफ योर करियर है. बोर्ड एग्जाम बहुत जरूरी है. तो अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 in the bush वाले कॉन्सेप्ट से आई से कि आपको ध्यान से प्रिपेयर करना है 9th 10th 11th 12th. मूविंग फॉरवर्ड, सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टेक अवेज अमिता. एक्सप्लोर करो, अभी एकदम भेड़चाल जैसे मत घुसो. First discuss what is the career option you want to get into. Then focus on one exam. कि भाई मेरे को IIT में जाना है या नहीं जाना है, मेरे को IPM में जाना है या मेरे को क्लैट में जाना है या मेरे को नाटा में जाना है. ये कौन से करियर में मेरे को जाना है. मेरे को आर्किटेक्ट बनना है, मेरे को लॉयर बनना है, मेरे को जर्नलिस्ट बनना है, मेरे को क्या बनना है. तो उसका एग्जाम डिसाइड करो कि मेरे को इस एग्जाम की तैयारी करनी है. एंड देन मेक श्योर कि आप अपने बोर्ड एग्जाम को इंश्योर करो. And then you will be able to achieve success. So this is our planning strategy for 9th and 10th. कि अभी
डोंट गो एक ऐसे भेड़ चाल जैसे जस्ट डोंट गेट इनटू इट। अलग अलग चीजों को समझो, डिसाइड करो कि आपका गोल क्या है, फाइनल गोल को डिसाइड करो एंड देन कम बैकवर्ड्स। सो हैविंग सेड दिस, नाउ लेट्स डू दैट एक्सप्लोरेशन। अपन एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं एंड मैं आपको एक छोटी सी एक्सप्लोरेशन जर्नी में लेके जाऊंगा बच्चों कि क्या क्या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आप वो देख सकते हो, सुन सकते हो। तो आफ्टर 11th-12th में, मतलब आफ्टर 10th, जनरली बच्चों के 3 बड़े क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कौन सा बोर्ड और इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड। मैं इन सब चीजों में अभी आपको एक छोटी सी जर्नी करूंगा सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, देन यू कैन डिसाइड कि आपको करना क्या है। तो आफ्टर 10th अभी तक आप सब एक साथ पढ़ रहे हो, ऑल ऑफ यू। आपके एक स्कूल में एक ही 5-6 सेक्शंस होते हैं, सब लोग एक ही सेट ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, कोई अलग अलग चीजें नहीं पढ़ते। लेकिन 10th के बाद व्हेन यू गो इन 11th, you would get divided into 3 streams. And what are those 3 streams? You would get divided into science, commerce और arts and humanities. आपको इन 3 इनमें तोड़ दिया जाए। एंड आपके जो सेक्शंस हैं क्लास के, वो बच्चे या तो साइंस पढ़ेंगे, तो साइंस में they'll only study subjects like physics, chemistry, maths, biology. कॉमर्स में you'll study accounts, economics, business studies. ह्यूमैनिटीज में, आर्ट्स में यूल स्टडी इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो वाले सब्जेक्ट्स पर। तो ऐसे आपके सब्जेक्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। अभी एवरीबडी स्टडीज मैथ, साइंस, सोशल, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। साइंस वाला बच्चा ओनली मैथ्स एंड साइंस पढ़ेगा, कॉमर्स वाला बच्चा मैथ्स ऑप्शनल रहेगा, मैथ्स पढ़ना है तो पढ़ेगा, नहीं तो मैथ्स के साथ अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। आर्ट्स वाला बच्चा शायद मैथ्स पढ़ेगा ही नहीं, वो सिर्फ इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़ेगा। एंड एक है जनरल, you may pick up anything and you can do that. तो ऐसे 3 स्ट्रीम्स में डिवाइड होएगा और करियर ऑप्शंस ऐसे 4 में आएंगे। तो लेट्स वेरी क्विकली अंडरस्टैंड क्या क्या करियर ऑप्शंस आएंगे। साइंस में आपके करियर ऑप्शंस आएंगे, यू कैन गेट इनटू इंजीनियरिंग, यू कैन गेट इनटू मेडिकल, और यू कैन गेट इनटू प्योर साइंसेस। आप फिजिक्स में रिसर्चर बन गए या फिजिक्स के प्रोफेसर बन गए, केमिस्ट्री के रिसर्चर बन गए आप लेबोरेटरी में, जैसे अभी कोविड वैक्सीन का somebody in chemistry जिसने उसको रिसर्च करके इन्वेंट करा कि कोविड का कैसे वैक्सीन है, तो आपने वैसा रिसर्चर बन जाओगे। तो आपके 3 रास्ते निकले, आप इंजीनियर बन सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप प्योर साइंसेस के रिसर्चर बन सकते हो। साइंस अगर आपने, वेरी क्विकली, अगर आप इंजीनियर बनोगे तो आप क्या क्या बन सकते हो? आप इंजीनियर, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट, कमर्शियल पायलट, नेवल ऑफिसर, ये सारे प्रोफेशंस आप परस्यू कर सकते हो एज ए इंजीनियर। डिग्रीज आपको क्या करनी पड़ेगी? बीटेक, बी आर्किटेक्चर, तो ये आपकी डिग्रीज। सो साइंस का ये एक ब्रीफ रास्ता मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। तो आप अगर साइंस लोगे तो आप ये बनो, अगर आप मेडिकल लोगे तो आप डॉक्टर बन सकते हो, डेंटिस्ट बन सकते हो, नर्स बन सकते हो, थेरेपिस्ट, केमिस्ट, साइंटिस्ट बन सकते हो। डिग्री क्या मिलेगी? MBBS डिग्री का नाम है, BDS, BSc, बी फार्मा, ऐसी सारी डिग्रीज आपको मेडिकल में मिलेगी। सो अब ये सब मैं आपको बता रहा हूं एंड यू मे हैव क्वेश्चंस, सो क्वेश्चंस लिख के लें। आफ्टर द प्रेजेंटेशन यू कैन आस्क अस क्वेश्चंस कि सर ये क्या होता है, ये क्यों होता है, एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। तो अभी मैं सिर्फ आपको एक ओरिएंट कर रहा हूं, समझा रहा हूं। तो आप साइंस सिलेक्ट कर सकते हो, साइंस सिलेक्ट करके आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, मेडिकल कर सकते हो, या फिर आप प्योर साइंसेस कर सकते हो। प्योर साइंसेस करोगे तो आप क्या बन सकते हो? यू कैन बिकम अ साइंटिस्ट, जो वो जैसे मैंने बोला कोविड की रिसर्च कर रहा है। स्टैटिस्टिशियन, स्टैटिस्टिशियन इज समबडी जो जैसे क्रिकेट में वो एक पीछे स्टैटिस्टिशियन बैठा रहता है जो बताता है कि किसने कितना रिकॉर्ड बनाया, वो एक स्टैटिस्टिशियन होता है कि इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो सारे स्टैटिस्टिक्स को इकट्ठा करके रखता है। So you can become a statistician, you can become a microbiologist, जो अगेन रिसर्च करता है, लेबोरेटरी में काम करता है। You could be a programmer, ऐसे सब आप काम कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस में आप प्रोग्रामर बन सकते हो। डिग्रीज आप BSc कर सकते हो, B स्टैटिस्टिक्स कर सकते हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर सकते हो, ये सारी डिग्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट, आप कॉमर्स भी ले सकते हो, साइंस की जगह कॉमर्स। तो आपको साइंस नहीं अच्छा लगता है तो आप कॉमर्स ले सकते हो। कॉमर्स में आप क्या पढ़ोगे? कॉमर्स में आप प्राइमरीली डिग्री या डिग्री विद सर्टिफिकेशन, ऐसे 2 तरह के ऑप्शन ले सकते हैं। इसमें कॉमर्स के करियर्स कौन से? आप अकाउंटेंट बन सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, बैंकर बन सकते हो, स्टॉक ब्रोकर बन सकते हो।
तो अगर आपको वो फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, वो सब अच्छा लगता है कि कैसे स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाता है, तो आप फिर कॉमर्स ले सकते हो एंड यू कैन परस्यू दिस। डिग्रीज क्या मिलेंगी आपको? बीकॉम, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूएस, सीएफए, ऐसे सारे डिग्रीज या सर्टिफिकेशन आपको मिलेंगे, तो ये सब आप कर सकते हो। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज अगर ली आपने, तो फिर आप क्या बन सकते हो? यू कैन बिकम एन इकोनॉमिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, जर्नलिस्ट, जो टीवी का न्यूज जर्नलिस्ट आता है प्रणॉय रॉय वैसा वाला, सोशल वर्कर, राइटर, you can do these kinds of things. आपको फिल्म राइटर बन सकते हो, you can get into these डिग्रीज। आप बीए की डिग्री मिलेगी आपको, बीए इंग्लिश, बीए हिस्ट्री, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स की बीए की डिग्री मिलेगी। अब जनरल यू डिसाइड कि नहीं मैं यू वांट टू बी कुछ और, तो स्ट्रीम इंडिपेंडेंट, यू कुड बी इन साइंस, यू कुड बी इन कॉमर्स, और यू कुड बी इन ह्यूमैनिटीज। और फिर भी आप क्या परस्यू कर सकते हो? You could pursue law, you could pursue management, you could pursue hotel management, you could pursue mass communication, sports, performing arts, design. ये you could be in science, commerce और arts, उन तीनों में से होके आप इधर कहीं पे भी कुछ भी परस्यू कर सकते हैं। तो टिपिकल एंट्रेंस एग्जाम जो 12th के बाद आपको लिखने हैं, इंजीनियरिंग के जेई मेंस, एमएचसीईटी, अभी मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ। मेडिकल में नीट, मैनेजमेंट में आईपीएम का एक एग्जाम होता है, लॉ में क्लैट का एक एग्जाम होता है, स्टडी अब्रॉड में एसएटी एक एग्जाम होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एक नया एग्जाम इस साल से चालू हो गया है, सीयूईटी। तो जैसे मैंने कहा, जो भी आप डिसाइड करोगे ऑलमोस्ट हर एक का एक एंट्रेंस एग्जाम, और इनकी लिस्ट लंबी है। मैंने सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव 3-4 कुछ ही दी, इनकी बहुत लंबी लिस्ट है। सो ऐसे करके आप कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपके पास एक और सवाल आएगा 10th के बाद कि आप बोर्ड भी चेंज कर सकते हो, विच बोर्ड। सो आपके पास जनरली 4 बोर्ड के ऑप्शन है, सीबीएसई में कंटिन्यू करो, या आईसीएसई में कंटिन्यू करो, या महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जंप हो जाओ, या आईबी बोर्ड में चले। ऐसे आपके पास 4 ऑप्शन है। अगेन आई एम नॉट गेटिंग इनटू द निटिग्रिटीज ऑफ ईच वन ऑफ देम, आपको सिर्फ आई एम जस्ट थ्रोइंग देम अराउंड कि दिस इज व्हाट यू कैन डू। नाउ सीबीएसई, my battery is running low, let me connect my PC to first. Yes, thanks. चलिए, so which recommendation? अगर आप specific competitive exams की, नहीं आपको IIT की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, या कॉमर्स में CSEPT की तैयारी करनी है, we at Universal Tutorials recommend कि then you should choose CBSE board. वो generally ज्यादा aligned है in from these competitive exams. This is our recommendation. दूसरे बोर्ड के बच्चे भी एग्जाम्स लिखते हैं और पास आउट होते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, बट इट्स मोर अलाइन्ड। तो दूसरे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कर रहे हैं तो यू कैन पिक अप एनी बोर्ड, बिकॉज ये जो क्लैट, नाटा, एनआईटी का फैशन डिजाइन, एनडीए एक्सेट्रा, ये सारे जो एग्जाम्स हैं, इन एग्जाम्स में कोई बहुत टेक्निकल एग्जाम्स नहीं। ऊपर के एग्जाम्स ज्यादा टेक्निकल होते हैं, जहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स वैसे वाला स्ट्रक्चर आता है, तो वो ज्यादा सीबीएसई से अलाइंड है। दूसरे एग्जाम्स आर मोर एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स, इंग्लिश, मैथ्स ही के एग्जाम्स हैं, तो उसमें यू कुड बी इन एनी बोर्ड। अगर आप स्टडी अब्रॉड लेना चाह रहे हैं तो अगेन यू कुड बी इन एनी बोर्ड और आई, डिपेंड्स अपॉन आपको क्या करना है। सो अगेन आपको पहले सोचना है कि आपको करना क्या, उसके हिसाब से आपका बोर्ड डिसाइड। नाउ एडमिशन प्रैक्टिस क्या होती है 10th के बाद? जनरली you have to necessarily choose, जैसे मैंने पहले बोला, between science, commerce and arts. और most schools do re-admission after standard 10. आप उस स्कूल में रहोगे लेकिन फिर भी एक re-admission होएगा। Based upon your marks देने से हम आपको साइंस दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे, कॉमर्स दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। And basis of admission is different for different schools. कई schools 10th के बोर्ड एग्जाम तक वेट करते हैं, कई अपने ही बेसिस पे एडमिशन दे देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है ऑल द वे अप टू 10th तक रुकना है बोर्ड एग्जाम। आप अगर सपोज यू आर प्रेजेंटली इन 10th एंड राइटिंग द एग्जाम राइट नाउ इन द मंथ ऑफ अप्रैल में, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप डीपीएस, एपीजे, ये ऐसे स्कूल्स में जाके उनसे पूछें कि उनका क्या क्राइटेरिया है। इन्होंने सबने अलग अलग तरीके से, हो सकता है जिनमें से नहीं है कि एंट्रेंस एग्जाम लिख लो और आपको अभी एडमिशन कंफर्म कर दे। आईसीएसई के या आईबी स्कूल के तो ऑलरेडी एडमिशन हो चुके, तो आपको सबसे पहले पूछ के रखना है कि उधर एडमिशन क्राइटेरिया क्या है।
सबके अलग अलग है. Now I come to the last question, which is integrated, non-integrated. ये integrated, non-integrated, this was started in कोटा. इसका जन्म कोटा में हुआ है. कोटा में जो IIT की तैयारी करने जो बच्चे जाते थे, वहां पे what they used to do is they used to study in a coaching class, and धीरे धीरे वो कोचिंग क्लासेस इतनी ज्यादा फेमस होती चली जाएगी कि वो बच्चा कोचिंग क्लास की वजह से कोटा जाता था. तो वो अब स्कूल, तो उसका स्कूल, तो वो वहां पे एक डमी स्कूल में एडमिशन ले लेता था. बच्चा स्कूल जाता नहीं था, सिर्फ नाम के लिए एडमिशन लेता था, पढ़ता कोचिंग क्लास में. अब ये कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर होता गया कि धीरे धीरे ये ऑल ओवर इंडिया फैल गया ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि वहां के बच्चे बहुत अच्छा करने लगे. तो is this concept now come to Bombay also? Yes, it's come to Bombay also. It's in fact available all across India. So we at Universal Tutorials are also offering this integrated, non-integrated option, where you join us, हम ही पढ़ाएंगे, एक डमी स्कूल हम बन जाएंगे, and we would train you for that. So this is the integrated, non-integrated concept. What is this integrated, non-integrated? Non-integrated is the normal, जो आप स्कूल जाते हो और शाम को हमारे पास पढ़ते हो, जो आप स्टैंडर्ड 10 तक कर रहे हो. But integrated option is that you take admission to state or CBSE school, but all coaching is done with us, and only for practicals you go to that school. अब ये concept जो है integrated, non-integrated, पहले was only available in science. We at Universal Tutorials this year are also announcing this concept for commerce. तो जो CA CPT करना चाहता है बच्चा, IPM CLAT करना चाहता है बच्चा, can study with us accounts, economics, business studies as an integrated commerce college, and he can all study professionally. तो इससे professional exams के लिए बहुत ज़्यादा help होती है, because आपका double time waste नहीं होता है. So this brings me largely, ये एक SWOT matrix और है मेरे पास to decide on कि integrated और non-integrated के लिए decision कैसे लेना है. तो इधर ये हमारे colleague हैं RK Singh sir, whom we are partner for Champions for IIT. वो ये बहुत अच्छा एक तरीका बताते हैं, तो उनका हम ये methodology use करते हैं, where he says on the y-axis we've plotted intelligence of a student, on the x-axis we've plotted sincerity of the student. तो integrated, non-integrated आप decide कैसे करें as parents कि अगर आपका बच्चा highly intelligent and highly sincere है, तो आपके लिए शायद difficult है, आप कुछ भी choose करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, because integrated लें या non-integrated लें चलेगा, वो बच्चा सब जगह अच्छा परफॉर्म करे. लेकिन अगर आपका बच्चा हाईली इंटेलिजेंट है बट ही इज लो ऑन सिंसियरिटी, देन वी रिकमेंड यू शुड गो फॉर इंटीग्रेटेड ऑप्शन. बिकॉज वो क्या होगा, हाईली इंटेलिजेंट है बट सिंसियर नहीं है, तो वो स्कूल जब जाएगा तो स्कूल में बोलेगा मेरे को कोचिंग का होमवर्क मिला था, इसकी वजह से मैंने नहीं किया. कोचिंग में बोलेगा कि मेरा स्कूल का लोड था, इसकी वजह से मैंने नहीं करा, और दोनों जगह बहाने मारेगा और कहीं पे भी वो अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा. या उल्टा बच्चा, he is low on intelligence but high on sincerity, इस बच्चे को समय ज्यादा चाहिए, because sincere तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको वो प्रोफेशनल एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए ज्यादा समय चाहिए. तो अगर वो नॉन इंटीग्रेटेड में गया, सुबह स्कूल जा रहा है, शाम को कोचिंग आ रहा है, तो उस बच्चे के पास समय नहीं मिलेगा. सो वी रेकमेंड ही शुड बी इन इंटीग्रेटेड. एंड अगर a kid is low on intelligence and low on sincerity, we recommend non integrated options for him, क्योंकि ये वाले बच्चे के लिए डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है. तो नॉन इंटीग्रेटेड में जनरली डिसिप्लिन करना मुश्किल होता है, तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट ही रिमेन्स इन एन नॉन इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट, वहां पे ये बच्चा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा. नाउ विद दिस, you know, I like to invite my colleague Manish to take forward from here. Manish sir, there's a lot of matter to be covered, so मैं थोड़ा सा जल्दी कवर किया है. Now it's all yours. अब आप इसको लेके जाइए, because हमारे पास बहुत सारा मैटर होता है. Me and Manish के लिए सबसे बड़ा dilemma is कि कैसे हम आपको कवर कर सकें. So a lot of things I have not covered that is available for question answers. Manish, all yours from here. Thank you. Thank you so much, sir. And I hope I am audible. So that was sea of information, and आपने एकदम सही कहा, sir. So this is like a very complex topic to discuss, to think about, to deliberate, to share कि 9th, 10th, 11th, 12th कैसे plan करें. How do you plan your 9th, 10th, 11th, 12th? You know, what makes it complex is that I cannot give, or we cannot give one solution. We cannot tell you कि ये 10 नंबर का जूता है जो कि सभी को आ जाएगा और सभी पहन लें. That doesn't work when you're talking about your career planning, your higher studies planning, and that's what makes it very, very complex.
I'll mute somebody who is okay. I don't have rights right now. Thank you. So because this is such a complex topic, I think Anwar sir, you did a great job where आपने उसको एक limited time में और कुछ limited slides में बांधने की कोशिश की. But we'll be very happy to again discuss with you on one-on-one basis about your case और उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा. So sir talked about in general what 9, 10th and 11, 12 planning is all about. I will be more specific now, so I'll talk about possibly more operational in nature, and I'll talk about more about how your months could be starting from 11. आपके वो कुछ months कैसे हो सकते हैं depending on what routes you have taken. So I will pick from where sir left in the same PPT, and I hope you're able to see my presentation, which is on your screen now. So I'm picking from the same slide where he left. Thank you, sir. So आगे चलते हैं. So what I plan to do now is, like I said, I'll be more operational in nature. Sir ने हमको जो overview दिया, I will try to pick some very popular career options that students would choose from their 11th standard, and I'll try and give you as much modular information that is available ताकि आपको एक visualization आए. तो अभी हमने broad picture की बात की, अब मैं आपको कुछ specific information दूंगा so that आप उसको visualize कर पाएं that if you are taking any of these routes, how you should plan your 11th, 12th, let's say month wise, quarter wise, और आपको क्या क्या करना है साथ में, या क्या बड़े milestones आएंगे अगर हम किसी एक route को पकड़ के चलने वाले हैं. So I will talk about 4, let's say most popular, mostly followed, या एक 4 broad categories, आप जैसे भी समझना चाहें. So I will talk about JEE NEET plus study abroad का एक route. ये रूट कैसा होता है, ये कैसा दिखता है, इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं अगर आप इसको करना चाहते हैं. I'll talk about the commerce route, where I'll talk about CA and cost accounting वाला route, CA में cost and management accounting. I'll talk about the management and law वाला route. तो अगर आप management या law करना चाहते हैं after 12th, so how should your 11th, 12th look like? Mostly मैं 11th, 12th की बात करने वाला हूँ कि वो 2 साल आपके 11th, 12th के आपके major milestones क्या होंगे. And I'll also talk about a pure study abroad route. Now let us understand, ये जो भी मैं आपको route बता रहा हूँ, these are not mutually exclusive. ऐसा नहीं है कि अगर आप इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, the only option you have is study abroad. You can also do engineering, medical or medical, or you could also be pursuing management या law की भी आप तैयारी साथ साथ में कर रहे होंगे. आप कॉमर्स के साथ IPM की तैयारी कर सकते हैं, आप कॉमर्स के साथ स्टडी अब्रॉड की तैयारी कर सकते हो, आप IPM लॉ के साथ स्टडी अब्रॉड की तैयारी कर सकते हो. एंड देयर आर ऑफ कोर्स अदर रूट्स लाइक डिजाइन, डिफेंसेस, एविएशन सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट और बहुत सारे रूट हैं. सो इतनी भूमिका मैंने इसलिए बनाई, आई लेड सो मच ऑफ बैकग्राउंड एंड आई हैव स्पेंट सो मच टाइम टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज. I am picking 4 important routes, or 4 popular routes, I should say, not important, but popular routes. And I shall try and give you some granular information जो आपको visualization में help करेगा, जो सर ने बताया उसको respect में देखते हुए. So let's first take the recommended path for JEE NEET if you are doing engineering or medical. JEE and medical भी हो सकता है ये, with study abroad being your plan B. Now what does study abroad as plan B means? If you don't land up with a good institute in India for your engineering or medical studies, rather than compromising, can you also have an option जहाँ पे आप फिर बाहर जाके अच्छे universities में दाखिला ले सकें? You get admit from good reputed foreign universities and you pursue your higher education after 12th from there. In case JEE doesn't work out, NEET doesn't work out, medical doesn't work out, given the competition levels, then what can you do? तो एक study abroad का हम plan B लेके चल सकते हैं. So like I said in one slide, the focus is, or we have made an attempt to make you see the entire 2 years journey. So let me attempt it. सबसे पहले लेते हैं JEE वाला route. So let's say you go for the engineering option and you decide to take the engineering option or the medical option, and you are also keeping study abroad as your plan B, that if something doesn't work out in India, अच्छे colleges में admission नहीं मिला India में, तो हम बाहर जाके पढ़ सकें. So to understand that, the tool that I am using is timeline. एक timeline के साथ मैं आपके साथ चालू करता हूँ.
So after you give your board exam, इस साल 10th के बोर्ड हो रहे हैं मई में, by June first week they should get over, but in a normal year pre-pandemic they would get over by March, mostly by first week of April. March April में वो खत्म हो जाते हैं, but I'll take the middle path. So in 11th you start with your IIT JEE NEET prep. आप हमारे जैसे किसी इंस्टीट्यूट में IIT के लिए, मेडिकल के लिए या दोनों के लिए एडमिशन लेते हैं, एंड मई जून ऑफ योर 11th, तो आपको जो नीचे दिखेगा वो आपका स्टैंडर्ड है, और आपको उसके टाइटल में मंथ दिख रहा है, और टाइटल के ऊपर आपको वो माइलस्टोन दिख रहा है या वो एक्शन दिख रहा है, वेयर व्हाट यू आर सपोज टू डू. So you are starting with your IIT medical training in month of May, June of your 11th standard. आपने ये चालू किया. Because study abroad is your plan B, आप ये एक ऑप्शन साथ में परस्यू करना चाहते हैं. So you get with SAT, which is Scholastic Aptitude Test. बाहर पढ़ने जाने के लिए, US, UK, कनाडा पढ़ने जाने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है. इसमें सिलेबस इज नॉट दैट वाइड, इसका स्कोप इतना ज्यादा नहीं होता है, तो आप पैरेलली इसकी तैयारी कर सकते हैं इन 11th, जब आपकी स्टडीज ने बस पिक करना चालू किया है. स्कूल बहुत स्लो चल रहा है, IIT मेडिकल बस प्रेप ने अभी होना चालू किया है. एट दैट टाइम यू ऑल्सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर टाइम इनटू स्टडी अब्रॉड. तो आपका स्कूल चालू हुआ है, आपने स्टडी अब्रॉड प्रेप चालू किया है विद मेडिकल एंड इंजीनियरिंग. September month could be your midterm exams in school, and you could be writing SAT की आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी. तो if you look at this, 4 months of training and you're ready for study abroad. इससे ज़्यादा और कोई ट्रेनिंग की आपको जरूरत नहीं है. In October month of your 11th, you are possibly किसी एक सैटरडे को ये एग्जाम होता है, तो आप वो फर्स्ट वीक के सैटरडे को जाके आपका SAT का अटेम्प्ट देते हैं. नाउ दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लान बी, वेयर अभी आप 11th में ही हैं, आपने स्टडी अब्रॉड के लिए अपना एग्जाम लिख के खत्म कर दिया. You don't need any more training now. You don't need to put any time in this, और आपका ये bandwidth clear हो गया, where you are continuing with your school studies. अगर आप नॉन इंटीग्रेटेड में हैं तो स्कूल स्टडीज एंड कोचिंग, अगर आप इंटीग्रेटेड में हैं तो आपका कोचिंग और स्कूल सब एक जगह हो रहा है. कोचिंग किसकी हो रही है? IIT और मेडिकल की. November to Jan, this is the time, November to Jan, when you focus on your JEE मेडिकल स्कूल, क्योंकि स्टडी अब्रॉड के सारे प्रिपरेशन हो गए, स्कोर आ गया, ये स्कोर 5 साल के लिए वैलिड होगा, SAT का जो स्कोर आएगा. वी मूव ऑन. आफ्टर यू हैव डन दैट, जैन तक आपने तैयारी की. फरवरी मार्च जब आप 11th का आपका फाइनल एग्जाम लिखेंगे, आपका JEE नीट प्रिपरेशन चल रहा है, आपके स्कूल के एग्जाम्स इंटीग्रेटेड में हो, आप नॉन इंटीग्रेटेड में हो, this is the time when you're writing your 11th final exams and you are graduated to the 12th standard. Before your 12th starts, ये जो मार्च वाला पीरियड है, when you have ended this and your 12th is about to start, you go for a TOEFL training. अब ये TOEFL training क्या है? TOEFL is an exam which is required if you want to study abroad. It's called Test of English as Foreign Language. Indians को ये एग्जाम लिखना जरूरी है क्योंकि English is not a native language for us. So foreign universities would mandatorily, all universities across the world will ask you score of this exam. ये कि English का छोटा सा एग्जाम होता है, 3-4 हफ्ते की आपने ट्रेनिंग की between your 11th-12th gap, जो आपको जो भी छोटा मोटा वेकेशन मिला, and you do the training and you write your exam. By May, June, your 12th classroom coaching or school coaching starts. 12th में, now you're only focusing on JEE medical, which is your plan A. Entire bandwidth is free. आपको 2 टेस्ट के स्कोर आ गए हैं स्टडी अब्रॉड के लिए, अब आप सिट टाइट हैं, यू आर फोकसिंग ऑन योर JEE मेडिकल. 12th में आ गए हैं आप, तो ये आपका पीक पीरियड है, वेयर गोल्डन पीरियड है, वेयर यू आर इन्वेस्टिंग मैक्सिमम टाइम फॉर योर इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड स्कूल स्टडीज. सितंबर टू दिसंबर आपका थोड़ा थोड़ा समय लगने लग जाएगा फॉर अप्लाइंग टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज. यू आर स्टिल इन योर 12th and this is the time when you will make your application. Unlike India, यहाँ पे आपका कोई एक AIR नहीं आएगा, आपके स्कोर के साथ आपको एक एप्लीकेशन बनाना है जिसमें आपको कुछ एसेज लिखने हैं, आपका रिज्यूमे बनाना है, टीचर से रिकमेंडेशन लाना है. So maybe more detail could be dealt on this in the study abroad webinar, but September to December, few hours in a week could go into making of application and filing of application to selected foreign universities. अब अभी भी 12th में है, मगर 12th के बाद के लिए application 12th में ही लग जाएगा, September to December. We move on. Once you have done that, December से March, this is the beauty of plan B.
December to March आपके admits आने लग जाएंगे foreign universities के. You will be receiving calls from them. You will be hearing from them about the admission decisions. This is also the time when during a normal year you would be writing your JEE mains. Normal year में आप 4 बार लिखते थे. पहला आप जनवरी में कभी लिखते थे, then you get February and then you get April and so on. So this could be the time when you are also writing your JEE mains. आपके एडमिशन डिसीजंस आ गए हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज से, आप जेई मेंस का एग्जाम लिख रहे हैं. दिस गिव्स यू अ फेयर आइडिया ऑफ वेयर यू आर लैंडिंग इन इंडिया, व्हाट ऑप्शंस, व्हाट काइंड ऑफ कॉलेजेस, एडमिशंस यू कैन लुक एट इन इंडिया. बाय मार्च अप्रैल यू आर राइटिंग योर 12th बोर्ड एग्जाम्स. आपके पास एडमिशन डिसीजन है फॉरेन यूनिवर्सिटीज से, मेंस में आपका परफॉर्मेंस आ गया है, एंड 12th बोर्ड इज व्हेन यू आर राइटिंग इन मार्च एंड अप्रैल. May to July, this is when you are confirming your admission. May month में आपको आपका admission confirm करना है, which means foreign universities gives you 2 good months to decide if you want to join them. And if you want to join them, then you have to select the university, the one that you want to join. You could be writing your advance and you will be going for your visa in the month of July. So May to July goes in this, and possibly somewhere in the August month is your departure for foreign university, if you have selected foreign university option. Otherwise, आपका मेंस में performance अच्छा है, you are sure of getting a good admit, you may not exercise any option of going abroad and you continue with your studies here in India. So this is a typical popular route for engineering students. अगर आपको pure engineering करना है, pure medical करना है, study abroad के साथ नहीं करना है, तो you remove all the study abroad milestones, and this is your timeline for IIT JEE or NEET. I move on. Let me take another one, which is commerce. तो जैसा मैंने बताया, हम 4 routes की बात कर रहे हैं. I may not be taking all combinations, but by the time I finish, आपको idea आ जाएगा कि इनको mix करके आप दूसरे combinations भी बना सकते हैं. Recommended for CA, CMA as Plan B. Let me take you through that. So if you are opting for commerce, and like Anubhav sir explained in his previous slides, where he said that after 10th you will pick certain subjects of commerce stream like maths, economics, accountancy, business studies. So if you have picked that, June to January, so basically you start in June of your 11th month and January तक आपका 11th का study चलेगा, where you would have picked commerce subjects. So I'm talking about CA, CMA. आप मेरे साथ वो वाला option देख रहे हैं. July month, you can go for other options if you want to. You could pursue management or study abroad or law. You can start these preparations in your 11th ka July if you want to. But if you are more focused on, let's say, CA exams or accountancy and cost management exams, then possibly 11th is when you should build on your fundamentals of accounts, eco, business studies. March में आप 11th का final exam लिखेंगे, and then your golden period starts from here, where in April you start with your 12th commerce. आप 12th में आ जाएंगे और अपने commerce subjects लेंगे. CA foundation, तो CA करने के 3 important steps होते हैं, 3 stages आपको clear करनी पड़ती हैं. The first stage is called CA foundation. It has 4 subjects: accountancy, economics, rather 6 subjects. So 4 paper होते हैं 6 subject के. So you do accountancy, economics, law, statistics. So you do all these courses, English. So CA foundation preparation starts from your 12th May. जब आप 12th में हैं, उस साल के May month से आपका CA foundation prep चालू हो जाएगा. 12th plus CA July to Jan, ये parallel में आपका preparation चलता रहेगा. अभी आप 12th में हो, July से लेके January of 12th तक आप CA और 12th board दोनों की तैयारी साथ साथ में कर रहे हैं. February month is a time when you're writing. February, April के बीच में is the time when you're writing your 12 board exams, depending on how board or council plans them. So this is when you're writing your board exams. Because you're preparing for CA foundation in parallel, May month में उसका एक first attempt आता है. तो May, June में CA foundation, इस साल वो June में हो रहा है. Normal year वो May में होता है. So right after your board exams, you go for your CA foundation first attempt, which could be May month, and you start with your CMA preparation. So basically, if you note, CMA ka preparation happens after 12th board.
12th बोर्ड के बाद ज्यादातर बच्चे अपने सीए फाउंडेशन की परफॉर्मेंस और प्रिपरेशन को देखते हुए सीएमए का ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं और 12th बोर्ड के बाद यू विल सी योर सीएमए प्रिपरेशन स्टार्ट. जुलाई टू नवंबर यू प्रिपेयर फॉर योर सीएमए और सीए फाउंडेशन. अगर फर्स्ट अटेम्प्ट उस समय नहीं निकला तो अब आप 12th के आगे आ गए. सो आई हैव कॉल्ड इट पोस्ट 12th. So post 12th of July to November is your CMA preparation and CA foundation preparation if first attempt CA foundation is not cleared. अगर वो clear हो गया है तो आप CMA में शायद नहीं जाएंगे and you may want to go for your inter preparation. November post 12th, जो पहला नवंबर आएगा post 12th का, is when you may be writing second attempt of CA foundation or first attempt of CMA foundation. तो CMA के भी 3 स्टेज होते हैं. It stands for Cost and Management Accountancy. ICWA इसको ये डिग्री देता है. CA ICAI बॉडी है वो देते हैं. तो सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ CA फाउंडेशन और फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ CMA ये वाले अटेम्प्ट्स होंगे नवंबर मंथ में. 12th पास करने के बाद जो नवंबर आएगा उसमें ये अटेम्प्ट होंगे. ये कभी नवंबर में होता है, कभी दिसंबर में होता है. नॉर्मल ईयर इज नवंबर मंथ. सो दिस इज अ टिपिकल रूट फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट टारगेटिंग CA या CMA प्रोफेशनल कोर्सेज. Let me move on. Let me look into a route now. Let me share with you a recommended path for management or law aspirants. Let's say you want to do management after 12th or you want to do law after 12th. Like I said, ये अपने आप में watertight नहीं है. They'll have a lot of overlaps and you can mix, combine them and create your new path. अच्छा, ये सब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं on a PDF file. I'll share a number with you. आप उस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई करके ये जितना भी हम शो कर रहे हैं आपको अभी शेयर कर रहे हैं आपके साथ, उसका पूरा PDF यू कैन हैव एज योर पर्सनल कॉपी. सो गोइंग टू IPM रूट. नाउ फॉर IPM, लाइक सर सेड, आपको याद होगा कि ही वाज टॉकिंग अबाउट अ जनरल ऑप्शन इन वन ऑफ हिज स्लाइड्स व्हिच एनी स्ट्रीम ग्रेजुएट, कोई भी 11th 12th का कोई भी बच्चा वो स्ट्रीम को परस्यू कर सकता है. तो मैनेजमेंट और लॉ दोनों जनरल रूट वाले हैं. So you could be picking any subject in your 11th. It could be pure sciences, it could be commerce, it could be arts, it could be IIT wala route and management. You know, it could be study abroad का route and management. It could be commerce का route, CA वाला route plus management. आपको लगता है आपके पास ज्यादा energy है, bandwidth है, आप उतना समय devote करना चाहते हैं, आप handle कर सकते हैं. So you could go in this route. So 11th, or you can only go in this route. आपने pure schooling लिया, science, commerce, arts. 11th में, मई जून में आपकी स्कूलिंग चालू हुई. जून से यू स्टार्ट विथ योर IPM या CLAT. व्हाट इज IPM? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट. ये एक एग्जाम का नाम है IPM 80, बट दिस इज लाइक मदर ऑफ ऑल एग्जाम. सो जितने भी मैनेजमेंट एग्जाम्स होते हैं हमारे मुंबई, नवी मुंबई में NPAT, नरसिंह मुंजी का एग्जाम बहुत फेमस है, उसकी भी तैयारी यहीं पे होगी. देन यू हैव CLAT, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, तो लॉ एंट्रेंस है ये. तो उसकी तैयारी आपके 11th के जून मंथ में यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स इन पैरेलल. यू शुड नॉट वेट फॉर एनी अदर अनाउंसमेंट्स और इवेंट्स टू हैपन. आपको 11th के जून में चालू कर देना चाहिए. दिस इज द रिकमेंडेड पाथ. योर प्रिपरेशन फॉर IPM और CLAT वुड एंड आपके 11th के जनवरी तक ये प्रिपरेशन एंड हो जाएगा. सो यस, दिस इज लॉन्ग प्रिपरेशन. कुछ 8 से 10 महीने का फोकस प्रिपरेशन करना पड़ेगा to get a hold of IPM and CLAT exam. These are very, very competitive and popular exams in India for management field, for law field. February, March, you're writing your 11th final exams. April to June, between this period, your 12th would start. After 12th class चालू हो जाएगा for science or commerce or arts. May to December, you are going for test-based doubt solving. Remember, you have already done coaching with us or with any agency that you have deployed for this. But May to December, you cannot leave it just like this. So you have to be in touch. You go on test-based doubt solving where you write test and you do doubt solving May to December for IPM or CLAT. So you are in touch and you go to that next level of your preparation. From there, January to March, you again focus on your 12th board because 12th board marks are very important for any purpose, for your job purpose, for higher studies, for admission to colleges in India. So 12th को focus करने के लिए आप 12th board पे वापस focus कर रहे हैं. April to May,
आपके 12th का अप्रैल टू मई जब आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया है, you do a crash course, a power packed 30-35 days crash course on management and law. आपने एक full year course किया, फिर आपने test based doubt solving लिया, and then you're getting into a crash course module where you are revising at a high pace everything that you've done till now. तो अगर आप वो design समझेंगे, you do training, you do testing, and then you do rigorous revision. मई जून नॉर्मल ईयर में आपको आपका IPM क्लैट का एग्जाम लिखना पड़ेगा. These are competitive exams, so they will be on a defined date, so you will write them. अब ये करियर्स क्या है, इसके हमने एक अलग वेबिनार किया था. IPM एज अ करियर और लॉ एज अ करियर, ये एक अलग वेबिनार था. Here I am talking about that timeline. If you get selected, then June to July, if you get selected in the written test, जून टू जुलाई के बीच में आपका सेकेंड राउंड ऑफ सिलेक्शन होगा, where you will be called for group discussion, personal interview, essay writing. If you get selected in the written test, तब जून जुलाई में आप ये काम करेंगे, and then August is when you start. So this is pure management law with any other stream. I come down to the fourth and the last path that we are sharing with you. So this is around study abroad. If you are planning, plan A is study abroad. आपको बाहर ही जाके पढ़ना है, you are decided. Then you start with your stream, science, commerce, arts. You could come from any board like Sir said, IB or any other board. You could come from any stream. अगर engineering करना है तो ideally science, finance management करना है तो it could be commerce, psychology economics करना है तो it could be arts. तो ये आपने 11th में आपके subjects लिए हैं. जून में you start with your SAT preparation. You write SAT mocks by September, so all preparation ends. जैसा मैंने JEE में बताया था. अक्टूबर में आप 11th में हैं, अक्टूबर में आपने सैट का फर्स्ट अटेम्प्ट लिया, इसका स्कोर 5 साल के लिए वैलिड होता है. तो मैं बहुत सारे पॉइंट्स आपको वैसे भी बताता जा रहा हूँ जो SAT के सेमिनार में हम अलग से बताते हैं. December, if required, many students do that. They go for second attempt of SAT, but you don't require training for that. This could be score improvement. क्या 11th के December में एक second attempt ले लें SAT का. Then January to March, you focus on your 11th studies. 11th final exam पे आप focus करते हैं. Please note that for studying abroad, 9th, 10th, 11th, 12th, all these grades are given weightage. IIT JEE में 11th को कोई नहीं पूछता, मगर अगर आपको बाहर पढ़ने जाना है, your 11th grades are also equally important. We had a student who did very well with his SAT, who did well in his 10th standard, rather phenomenal in his 10th standard. 12th में भी उसने अच्छा किया. But somehow he took his 11th very lightly and he did not get good scores. Good as in, जैसा उसका performance 10th या 12th या SAT में था, those scores were not justifying. And school, they were not ready to help, which they were right in their own way. So the admit decisions पे उसका फर्क आया, university के application पे उसका फर्क आया. तो 11th के exam पे focus करने के लिए Jan, Feb, March का समय मिला. April to June आप TOEFL training करेंगे, मैंने अभी TOEFL के बारे में बताया था. Then you start with your 12th class. You take your TOEFL exam somewhere in June, July, and you start making your profile in the month of July and August. Similarly, September to December is the time period when you start applying to foreign universities through your application. तो हर यूनिवर्सिटी को आपका एप्लीकेशन भेजना है. जेई में आपका एक रैंक आएगा और वो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे कि ये सीट खाली है, बताओ क्या चाहिए. वहां आपको कोई कहीं नहीं बुलाएगा. You will have to make your application and apply to individual universities telling them that, hey, I am this, these are my scores, these are my credentials, please consider me for admission to your college. So वो September से December में होगा. December से March is when you will hear from universities about admit decisions. 12th का board exam आप लिखेंगे, March, April में is when you will write it. May, June, July will be your decision making to a university. May में आप decide करोगे. June, July goes into visa and other things. August, September is your departure for your foreign university. So ये जो path था, ये true plan A, study abroad, purely focusing on study abroad है. ये 4 paths थे. Again, they can be mixed, matched, and आपके लिए customized path बनाया जा सकता है with more details for what you want to do, where you should study, what else you should do, what skills you should pick up. ये one-on-one basis पे customized solutions develop किए जा सकते हैं, जिसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगा. So we have some major verticals inside our organization. I'll take 5 more minutes before I wrap up, where we serve students from 9th to 12th grade and beyond, where we do masters.
So let me tell you what are these grades. So at Universal Tutorials, this was started by this mission, I should say, or initiative was started by Anubhav sir way back in 1998, where he started, every start happens, a very humble start with 3 students. In these past 23, 24 years now, we have coached, trained, influenced and impacted life of some 33,000 students with respect to their studies, academics, and careers. We are spread across 7 physical branch locations, and now we also have, thanks to pandemic, where we have a strong digital presence, and there are a lot of our products which we serve across India through digital medium. So we are spread across 7 physical branch location, and pan India we serve digitally. हमारे 3 broad areas हैं जिसमें हम services देते हैं. One is board exams, where we train for board exams. We do Indian competitive exams like NEET, medical, IPM, CLAT, and we do study abroad. 12th के बाद बाहर पढ़ने जाने के लिए या bachelor's के बाद बाहर पढ़ने जाने के लिए study abroad division. Board exams में क्या है? So board exams में we do coaching. We do 9, 10 CBSE, ICSE coaching. We do 12th CBSE commerce. When I say 12th CBSE commerce, I should be saying 11th, 12th CBSE commerce coaching. We do 11th, 12th CBSE pure science coaching. So if you want to study physics, chemistry, maths, आप हमारे पास English 11th, 12th CBSE science में पढ़ सकते हैं. अगर आपको IIT करना है तो मैं अलग बताऊंगा. If you want to do accountancy, business studies, economics, ये सब आपको पढ़ना है. आप CBSE बोर्ड लिया आपने 11th में, तो 11th, 12th CBSE की commerce coaching हम पूरा करके देते हैं. We do test series of all these products plus 12th state. अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में हैं तो आपके 12th जो कि बोर्ड ईयर होगा उसका टेस्ट सीरीज we do where we do mock full length test for 12th state. So coaching और टेस्ट सीरीज प्रोडक्ट है हमारे बोर्ड एग्जाम सेक्शन. Indian exams, so we prepare for a lot of Indian exams, and all the Indian exams that we do, जैसा सर ने बताया, we have started offering integrated and non-integrated. तो अगर 10th के बाद आपको integrated course में जाना है, non-integrated में जाना है, we do both. So if you do integrated, we have 2 options. You could be in a integrated CBSE option, जहाँ पे आप हमारे साथ ही पढ़ेंगे, आप CBSE स्कूल में enroll होंगे, and we do entire coaching, training, competitive exam preparation for you. Or you could choose state board, state junior college, वो भी हमारा खुद का junior college है, so you get enrolled there, and we do all your coaching, training, competitive exam preparation. Or you could be doing a non-integrated option 11th, 12th में हमारे साथ, जहाँ पे आपने आपका एक स्कूल चूज किया हुआ है, आप मॉर्निंग में वहां जा रहे हैं, किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हैं आप, एंड इवनिंग्स में यू आर स्पेंडिंग टाइम विद अस फॉर कोचिंग एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन. तो आफ्टर 10th क्या क्या कोर्सेज हैं? वी डू इंजीनियरिंग कोर्सेज. सो वी प्रिपेयर फॉर IIT, JEE, BITSAT, Maharashtra CET, Vellore and Manipal and all these engineering exams that you can think of. We prepare that. We do it in association with Champions Institute based out of Mumbai. Navi Mumbai में हम लोग साथ में काम करते हैं, led by RK Singh sir जो सर ने बताया था. We do medical similarly with Champions. So 11th, 12th NEET preparation, we help students there. So 2 साल के integrated, non-integrated program options हैं. हम 11th, 12th CBSE commerce coaching करते हैं, test series run करते हैं. We help you prepare for Indian competitive law options, competitive exam options like law, like management, NPAT, Symbiosis, Narsi Munji, IIM Indore का IPM, तो हम इन सब की तैयारी करवाते हैं. And study abroad, 12th के बाद आपको बाहर जाके पढ़ना है, US, UK, Canada, Singapore, Australia. So we help you with all these country options where we train you, we advise you, we help you with your application strategy. So you get all, even with visa, so you get all services under one roof at UT in study abroad division. तो ये सारा काम करते हैं हम. Champions में जैसा बताया था, we have joined hand with Champions for competitive exam preparation, especially in medical and IIT, led by Professor RK Singh, who is a BTech himself from IIT Madras, and Champions is his initiative. So we have joined hand for Navi Mumbai, and we have produced some great results. We have our own junior college at Kharghar. So in case you are keen for a state board, Maharashtra state board, you don't have to look outside. We can offer you those solutions. Along with all this, we also do career advisory. You're not sure आपको कौन सा career choose करना है. You really don't know what subjects you like. You don't know what could be the best career option for you. You want to create a plan B, but you're not sure कि मेरा plan B क्या हो.
मैं मैनेजमेंट के साथ और कुछ कर सकता हूँ क्या, मैं इंजीनियरिंग के साथ मैनेजमेंट कर सकता हूँ क्या. So and an infinite number of questions you may have. So we have a product and service which we call Margdarshan, where you can take our help, where we do personality test for you. So through a test, एक साइंटिफिक टेस्ट से हम आपके की स्किल्स स्ट्रेंथ्स निकालते हैं और आपके लिए करियर मैपिंग करते हैं. You get exclusive sessions with career experts like Anubhav sir and myself, where we do 30 minutes, 3 to 4 sessions with you, and on one-on-one basis, every session has a progressive agenda to be covered, where you get customized, advised around what courses, which colleges, what exam, what preparation, which skills, with a detailed working plan. There's a review on each of these plans, and if there's any deviation, of course, there has to be a corrective action. All this is documented, structured approach के through आपको ये पूरी एक report मिलती है. So if you want, you can subscribe to our UT's Margdarshan services. ये one-on-one support है. This comes at a introductory price of 12,500 rupees inclusive of GST. अगर आपको एक अपना टेस्टिंग करवाना है और उसके बाद एक्सपर्ट सेशंस के थ्रू अपना पूरा एक करियर path banana hai, if you are in 9th, 8th, 10th, or you have run a little late, now you want to do something in 11th, you are entering 11th, still it could be done. So you can avail for ye career mapping, career advisory services of UT at this cost. Now, how you can do all of this is, there are some important things that you'll have to do. You'll have to meet us, you have to meet the admission counselor or the officials. You'll have to enroll in the given services, and it could be आपको अभी कुछ नहीं पता, पहले आप मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, उसके बाद आप हमारे साथ डिसाइड करना चाहते हैं कि आगे क्या करना है. So and then you'll have to prepare, and of course then you get to the admission. So ये सब कैसे कर सकते हैं? You'll have to take an appointment. You'll have to either call us or email us. One touch point is Mrs. Surjit. She's also part of this webinar today. This is a number which you may want to write down. Otherwise आप ये PDF में भी आपको मिलेगा. 9881999826. You call up Mrs. Surjit. You can fix an appointment with her, and she'll help you fix an appointment with Anubhav sir, with me, or both of us, as the case may be. You meet us online, physical, mostly online. And if you want to do physical, it could be Kharghar only. Then you decide, you can choose your program, and then you can enroll with us in the required program. So this is Mrs. Surjit's number and her email ID. You can also write to her, UTNM, Universal Tutorials Navi Mumbai. So UTNM surjit@gmail.com. In case you want PDF of this presentation that we just made, मेरा part छोटा था, but मैंने time ज़्यादा लिया because I wanted to go slow and share things with you in detail, and also repeat myself at times ताकि मैं clear sound करूँ. तो अगर आपको ये सब जो सर ने present किया, जो हमने together present किया, if you want this, आपको इस WhatsApp number को add करना है अपने phone में. You have to send a hi to this WhatsApp number 7710000469. You send a hi to this, and after this webinar, you will get the PDF of this presentation on your cell. These are again Mrs. Surjit's credential. Thank you so much for joining us. We are always very delighted to have you. You know, when you join us for Sunday webinars, we really feel great. Now it's the time for any questions, query, feedback that you may have. Both of us are available. Since I think we will appreciate that if you unmute yourself and ask question. There's also feedback link in your chat box. आप हमको feedback दीजिए. हमारे webinar experience को हम improve कर पाएंगे. Plus, we'll get in touch with you on one-on-one basis in case you want that to happen. You can put that in feedback and we'll get in touch with you. The link is there in your chat boxes. Zoom के chat box में वो link है. So thank you so much. Now we are good for questions. You can unmute yourself and ask questions. Roshni Kocheri. Yes, please go ahead. Unmute yourself and you can ask your question, Roshni. Okay, by the time Roshni does that, Vivan, you get an opportunity. Chalo. Hey, hi again. Thank you so much. Thank you so much for the session. I've been seeing a trend from a lot of parents around us, and I'm not too sure the relevance of this trend, but a lot of parents around us tend to prefer moving across to the state board when it comes to 11th and 12th.
irrespective of the board that they are in, when in 9th and 10th, they tend to move around to the state board. The ostensible reason for that tends to be higher marks that you can get in the state board if you do 11th, 12th in the state board. Is this true? Is there some relevance in this, or is this just a one-off type of example? Sir, I'll go. Yeah, please, sir. Let me tell you, this is more to do with the geography in which you are, Noddy. If I may say, this is because you stay in the part of geography in typical Andheri and वो वाले area में जहाँ पे largely CBSE and ICSE के schools का चलन comparatively बहुत कम है, and there were state board schools which have come up. And also what has happened is, in the integrated setup, CBSE does not really allow a true integrated setup. The coaching classes have a state board integrated tie-up, like we have at Universal Tutorials. We have a state board junior college. We don't have a CBSE junior college. CBSE, we have a dummy school tie-up. So in that part of Bombay, which is Andheri and those areas, there are more state board schools which are prevalent. So I think it is to do with the geography in which you are. You would see the exact opposite happening over here in Navi Mumbai, where people from state board or from ICSE shifting to CBSE, just for the simple reason that here the CBSE infrastructure is far more better than the state board infrastructure. So it's got nothing to do with marks. Marks was a perception. Jab your generation or my generation, we were studying. At that point of time, state board was at a lower end. CBSE was thoda sa, ICSE was even tougher to get at marks. But from 2009 onwards, they've been all brought at the same path. So largely they are similar. So marks wise, I would not say that it still holds relevance. It's more to do with infrastructure at your local geography. Makes sense. Thank you so much. Thanks. May I go ahead, sir? Yeah, please, madam. Go ahead. Yeah, thank you, Anubhav sir and Manish sir, for the very informative session. My question was again regarding the integrated course which UT is offering. You had mentioned that the state board will, the school part will be done by your school at Kharghar, right? And you mentioned a dummy one for CBSE. Could you just elaborate that a bit? Because my son is keen on doing the CBSE part when he's going to the 11th. So just keen on knowing which school it would be. He's currently doing his 10th. So he's really keen on pursuing the CBSE board in his 11th integrated. So just keen on knowing which school UT has tie up with for 11th. Ma'am, so we have couple of schools. I would not like to take the names of the forum, which is a public forum. When you meet us individually, I'll be able to tell you, but there's a school located in Panvel. There is a school located in Khopoli where we have these dummy tie-ups with. Allow me to not take the names in a public forum, but as these are dummy tie-ups, so मैं वो नाम नहीं लेना चाहता हूँ, but there are 2 schools which we have tie-up with. And when you meet us individually, I'll be able to take the names and tell you the details of those schools. Okay, thank you so much, sir. Yes, Mr. Deepak, please go ahead. Anubhav ji and Manish ji, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया. It was a really good to say informative session. Manish ji, मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरी बेटी जो है currently she is in grade 10th and उसका IIT के लिए she is aspirant for that. So उसका as per आपने जो graph मुझे बताया plan B, so basis that first attempt would be in Jan 2025, just for my calculation. The first attempt of what, sir? For JEE mains? JEE mains, correct, yes. JEE mains आएगा उनका, sir. She's in 10th, you are saying. So
24 में आएगा सर? Because 22 में she'll be writing her 10th. No, 23 she would be writing. She's currently gone, just commenced her grade 10. Yeah. Oh, she's 9 going to 10th. Yeah, yes. हाँ, तो आप सही बोल रहे हैं आप सर. The first attempt would be in Jan 25. If all goes well, Jan 25 में उसका mains होना चाहिए. Correct. Mains होगा. Okay. Okay. आप you also coach for non-integrated. So just wanted to know for grade 12 CBSE would be coaching would be given by you, correct? 11-12 science coaching, if you're talking about, yes, we do that, sir. 11-12 CBSE science coaching, we give that coaching. Okay. So I plan to enroll for that later on after her 10th. Sure. And just for my another kid, is there for grade 5 or 6, do we have any course for the knowledge builder, something general knowledge builder? No, sir. We are not doing any courses. जो भी नवी से छोटे हैं, below 9th standard, we are not doing any courses right now. Okay, because my elder daughter, she again after aspirant, she aspires for civil services. So any sort of something is you have for this? When to start preparation for such exams? So sir, civil services, अगर आप वो method समझेंगे, so what happens is after 12th you are doing some graduation, and graduation के बाद you are writing civil services, UPSC or वो सब exam. Today, so we don't have, first of all, we don't have any preparatory course for UPSCs, and we are only talking today up till standard 12th. तो graduation तो उसको करना है, BCom, BE, BTech जो भी करना है उसको. So she would be doing that, and then she'll in parallel उसके 3rd, 4th year में she'll prepare for UPSC. हमारे पास उसके कोई courses नहीं है. Okay, no, just I just thought maybe a short guidance from you, because I see many people's काफी लोगों का ये अनुमान रहता है कि the preparation goes very early, as similar to the IIT as well. हाँ, वैसा ट्रेंड हो सकता है सर, बट 3-4 साल लोग लगाते हैं उसको तैयारी करने में. But at school level, I don't think that is required. If there's a good newspaper reading habit, इससे ज्यादा तो अभी कुछ नहीं चाहिए. No, because it takes time for the kids to get into that groove of getting that overall knowledge and the awareness. So just for that guidance, that's all. Okay. Thank you. That's all from my side. Thank you, sir. Thank you. Janvi Purwar. Hello sir, I just wanted to ask, जैसे आप integrated course के बारे में बोल रहे थे, that for state board you have connections with the colleges, but for the CBSE board for integrated course आप लोग dummy colleges के साथ connect करते हैं. So does that make any difference for 12 boards or for the entrance exams for engineering? So I'll go first, sir. That doesn't make any difference, madam, here, because see, चाहे वो state board हो या CBSE board हो, the point is that you are formally registered with the board. The difference is you are not going to a regular school. Instead, उस समय आप आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जा रहे हैं. स्कूल के सब्जेक्ट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी सब आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे कर रहे हैं. बट यू आर फॉर्मली रजिस्टर्ड विद अ स्कूल. उसके इंपॉर्टेंट कुछ लेबोरेटरी डेज, उसके एग्जाम्स लिखने वाले दिन, वो सब दिन आपको स्कूल पे जाना है. अदरवाइज आप आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाके रेगुलर क्लासेस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. So will that affect any of the competitive exams? No. Will that affect in any way your board exam के marks? No. Because आप formally तो registered हैं. And जैसा सर ने बताया, state board में वो एक structure में कहीं ना कहीं allow हो जाता है. CBSE में it is more of a जुगाड़ that happens. But आप formally तो register होते हैं, जैसे आप regular में register होंगे, you will be a regular student from a school appearing for a board exam. CBSE में. CBSE. Okay. If I may add, madam, the only difference would be जब आप state board integrated लेंगे तो आप सिर्फ हमसे डील कर रहे हैं as one agency. Okay. और जब आप CBSE integrated ले रहे हैं तो there will be one more additional agency which would be that dummy school. So there will be interaction between the two, लेकिन वो interaction सब हम आपको करके देंगे, but yes, there will be two agencies involved.
तो सर जैसे आपने प्रैक्टिकल लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के लिए बोला, तो जैसे सर मेंशन कर रहे थे अनुभव सर की पनवेल और खोपली में है उनके सेंटर्स, so the child has to go to Panvel and Khopoli for the laboratory Once 2 weeks in a year, 2 से 3 हफ्ते साल में. अच्छा, बस 2 से 3 हफ्ते साल में to complete those, and we take them by bus and we bring them by bus. Oh, okay, great. Okay. Thank you, sir. Thank you. Yes, madam, go ahead. You have a question? Hello, Anubhav sir, Manish sir. Sir, मुझे wanted to understand what is the percentage for the integrated and the non-integrated at UT? You mean to say percentage of students, madam? How many Percentage students? of the students part, yes. Anu sir, you will take that. I did not hear the question. What did ma'am Madam ask? is asking what is the percentage of student in terms of numbers for integrated and non-integrated at UT? Ma'am, very interesting question. तो ये जो percentage of students है, initially जब शुरू में काम चालू किया था, अगर 100 बच्चे भर्ती होते थे, तो 100 में से it was कि 60 to 80% would be non-integrated and 20 to 40% would be in an integrated. Integrated कम popular था. But ये numbers आज की तारीख में उल्टे हैं मैम. अगर आप serious candidate हैं for IIT, CA, CPT इनके लिए, so it is अगर 100 में से बच्चे मेरे पास भर्ती हो रहे हैं तो करीब 60-70% students are in integrated program and 20-30% students are only in the non-integrated program. So these are the numbers which are typically right now, and this is typically moving towards more integrated. ज्यादा बच्चे integrated में आ रहे हैं and non-integrated comparatively कम होता जा रहा है. तो non-integrated में बच्चा किधर जा रहा है? IPM, CLAT, SAT abroad. अगर वो ये वाले कोर्सेज चूज कर रहा है तो वो नॉन इंटीग्रेटेड में रह रहा है. IIT, NEET, CA, CPT चूज कर रहा है तो वो इंटीग्रेटेड में. This is how the trend is. Okay, thank you so much. Can we get this recording session with us later on? Just have a. Yes, madam. It will be available on our official channel and also on our Facebook page. UT के Facebook page पे भी और YouTube पे भी UT में available होगा हमारे official page. Yeah. Thank you. Okay. Thank you so much. I think we are done with question and answer round now. Thank you for joining in, and do send us hi on this WhatsApp number if you want a PDF of this presentation. I'll share the number again. So I have one question before we end. Can I go ahead? Yes. Yes, sir. Yeah, basically, I just wanted to know that my son is very much interested and inclined for automobile industry, and I believe that automobile industry educations are better in German as a country. So does any kind of competitive exams required there, or what's your take to guide me on it? Not necessarily German being manufacturer of automobile, the education there for automobile is recommended. Otherwise, which you feel that, you can complete automobile in which of the countries, and for that, what preparatory examinations should be taken? Okay, so I'll go first. What's the name of your son, sir? Ranveer. He is in Okay. 9th standard. Yes. Okay. So how this will happen for Ranveer, sir? Let me answer it in two parts. So first part is if you are interested in automobile engineering, where all you can study and which is the right place. And second part is what should you do or what are requirements for Germany? So I'll take the second part first. G. Now, when it comes to doing your higher studies from Germany, and more specifically after 12th, let me tell you that Germany, there are different kind of institutes. So if you get into a government institute, yes, sir. And cost of education is zero for state universities. So cost बहुत कम है या नहीं है Germany में? The difficult part is it is a very, very competitive scene out there if you want to get into Germany, because you require superlative grades in your 12th standard science board exams. And also IIT mains marks are considered when you're talking about getting into top institutes of Germany, जो कि government owned होंगे. Zero cost education wale.
So you All right. require very high IIT mains ka ranking and very good 12th board exam ke marks. इस तरह से आप जर्मनी में जा सकते हैं. Now coming down to doing automobile engineering, so yes, certainly Germany is one destination, but then you can also look at US, because you would know that Detroit, okay, US की एक city, so Detroit is considered as world capital when it comes to automobile. तो आप US को भी अपना एक ऑप्शन बना के चल सकते हैं, and US में जाने का तरीका है using the SAT route. Most of the universities, good universities in US will offer you automobile engineering 4-year degree course आपको वहाँ मिलेगा. All right, sir. Okay. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, Anubhav sir. Thank you, Manish sir. A great informative session. I mean, these are the major confusions which every parents have at this stage, and you're just making it easier for us as we progress towards their academic career. Thank you, sir. I mean, more than an element of just being giving an information, and it's just more to do also with the social cause, or for more of a parents like us who intend to get more knowledge on this kind of a platform. Thank you very much. It has been indeed, good session, and we always find it to be interactive with other parents also, wherein we pick some ideas which probably doesn't hit to our mind. So thank you so much, Anubhav sir, and thank you so much, Manish sir. Thank you. Thank you, Thank sir. you. Pleasure. Thank you. Joining in. So we are formally done close with this the webinar. presentation, sir. So we are done with the, now look forward for our study abroad session, which is happening next month. Again, it will be sent on WhatsApp description box and Facebook, and also updated on our website. So as I said in the beginning, me and Manish, it's a regular feature that every second Sunday you will find us here on webinar doing a talk. And a full year ahead, we'll be doing a talk on many topics. We'll be talking about engineering, we'll be talking about medical, study abroad, medical in UK, UCAT. There are multiple things which we do. बहुत अलग-अलग चीजें, management, commerce, बहुत सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे. Please look out on this space. Thank you very much for attending. Thank you.